Let's start. So, welcome to Android course. Today we will be learning about Jetpack Compose modifiers, okay, and some of the layouts. Not the complex one, but definitely one of the most of the vitals one that we generally use while building an Android app. Okay. So, this will be the context or the table of content for today. Okay, we will be learning about modifiers. Okay, card, list, buttons, text fields, images, icons, and lots of new things. Okay, before proceeding, I can see that Harsh was able to complete the assignment just before the session. Any do we will be doing yesterday session? No, Raj. We will might not do that. Uh, but if you have any doubt, you can uh, feel free to ping me and we can connect. Okay. So जैसे कि we yesterday I talked about activity life cycle and I explained that everything have an life cycle. Everything starts and ends in programming. Generally, there are many things that we're gonna discuss in our course. For example, life cycle of an object, okay, when it creates and when it get out of the memory, life cycle of a composable, okay. आज जैसे हम composables पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे, though it will come into the fourth or fifth class of this week, okay. But we will gonna learn about that, okay. वैसे uh, uh, बिफोर दोस कंपोजेबल्स, ओके, जब कंपोजेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे तो होता क्या था, वी यूज टू यूज फ्रैगमेंट्स अलॉट, ओके, ओके, we used to use fragments a lot. Okay, now we'll see what is fragment. Okay, so फ्रैगमेंट का ना खुद का एक लाइफ साइकिल होता था. ओके, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट आई विल शोकेस व्हाट इज फ्रैगमेंट. ओके, अभी अगर आप लोग ने असाइनमेंट किया होगा ना तो यू माइट हैव अंडरस्टूड कि अगर ये एक्टिविटी ए है, ओके, ये एक्टिविटी बी है, ये सी है, ओके, you were able to navigate from activity A to activity B and activity B to activity C very easily, right? So you might have gotten an context कि भाई हम जो एंड्रॉयड एप्स में इतनी सारी स्क्रीन्स देखते हैं आर जनरली एक्टिविटीज ओनली, राइट? In most of the cases it is not, but in past generally यही होता था. Okay, every each screen was used to be an activity. Okay, फिर हम लोग ने कल सीखा कि इन सब के लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, राइट? एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट होगा, ऑन क्रिएट होगा, ऐसे करके पांच छह इसके होंगे, पांच छह इसके होंगे, राइट? पांच छह इसके होंगे. So later, the Android developer comes to know कि maintaining activities is a tough challenge. Okay, it takes lots of space in the memory and very hard to maintain. And passing the data, doing common things between them was very difficult. Okay, so Android team generally came up with an new option कि आप एक्टिविटी एक ही रखो, ओके, आप एक्टिविटी एक ही रखो, बट उसके अंदर ना आप ना फ्रैगमेंट्स बना लो, ओके, विच विल बी इन्फ्लेटेड अपॉन एन एक्टिविटी. ओके, सो फ्रैगमेंट इज नथिंग एंड इट्स एन एक्टिविटी ओनली विदाउट एन विंडो. ओके, अब मैंने ये जो लाइन कही है, यू विल गेट इट अंडरस्टैंड बाय रीडिंग ऑल दिस स्टफ. ओके, बट generally fragment is nothing but
एन एक्टिविटी विदाउट एन विंडो, ओके, उसमें आप करते क्या हो कि इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेटिंग हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटी, अब हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटी को एक ही रखते हैं। देयर विल बी वन एक्टिविटी थ्रू आउट द ऐप, और इसके अंदर हम बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं, लाइक एज मैनी एज आई कैन, ओके। जैसे ये फ्रेगमेंट ए है, ओके, आई कैन क्रिएट फ्रेगमेंट बी, ओके, आई कैन क्रिएट फ्रेगमेंट सी, ओके, और ये इसके अंदर ही इन्फ्लेट होते जाते हैं, ओके। नाउ इससे हमने एक चीज ये सीखी कि अब लेट मी इरेज इट, जस्ट अ सेकेंड। हमने ये सीखा कि नाउ दैट फ्रेगमेंट इज बीन चेंजिंग। अब मेरे को एक्टिविटी के जो स्टेट्स होते थे, जैसे लाइफ साइकिल वाले, ऑन क्रिएट, ओके, ऑन स्टार्ट, ओके, ऑन रिज्यूम, ऑन डिस्ट्रॉय, मेरे को ये बार बार ना हर बार चेंज या हर बार मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। आई विल डू एट वन प्लेस एंड थ्रू आउट द ऐप इट विल बी गेट मैनेज्ड, ओके। और मेरे को कुछ भी जो चीज नया नया यूआई दिखाना है, आई विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेगमेंट्स, ओके। So generally this was used to be followed till 2021, okay, but after that compose came, okay, जो अपन इसका भी एग्जांपल देखेंगे, okay। now इसका मैं अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं, लेट मी शेयर माय अनदर स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, टिल नाउ फ्रैगमेंट समझ में आया, व्हाट आई मेंट बाय फ्रैगमेंट एंड कैसे हम इवॉल्व हुए इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। व्हाट अबाउट अदर्स? आई एम गोना आस्क फ्रॉम पीपल हु आर वेरी न्यू टू एंड्रॉयड। विशेष, तुलिका, राज, दीपक, क्या हमें समझ में आया व्हाट इज फ्रैगमेंट? ओके, नाउ गिव मी अ सेकेंड। Is my device is visible to you all? Cool. So generally this is an iOS app only, but I'm gonna represent one of the scenarios कि क्यों वन एक्टिविटी आर्किटेक्चर या वन एक्टिविटी पे ही आपका ऐप चले इज अ गुड प्रैक्टिस, ओके। जैसे आई टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पॉटिफाई, ओके। सो द थिंग विद द स्पॉटिफाई, आप ये देख सकते हो, राइट, ये जो नीचे का जो मिनी प्लेयर है, ओके, दैट आई एम एबल टू स्क्रॉल, दिस मिनी प्लेयर इज अवेलेबल थ्रू आउट द स्क्रीन, राइट। मैं स्क्रीन चेंज करते जा रहा हूँ, मैं करते जा रहा हूँ, राइट, इट इज विजिबल थ्रू आउट द स्क्रीन। इवन इफ आई गो टू द सर्च एंड यू कैन सी आई एम एबल टू interact this, but I am also able to interact with this, right? Now try to understand the complexity। अगर ये फ्रैगमेंट्स या कंपोजेबल्स नहीं होते, ये सारी एक एक एक्टिविटी होती, और ये मान लो गाना चलता रहता और बीच बीच में मैं कुछ कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, ओके, so it might be so hard to control all those stuff in a different activity, right? आपको इसका एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ता, and based on that you have to do lots of configuration, right? बट एट द अदर एंड अगर यही चीज एक एक्टिविटी से कंट्रोल होती, ओके, मान लो आ, मान लो ये हमारा ऐप है स्पॉटिफाई का, ओके, एंड एंड दिस इज अवर मिनी प्लेयर, ओके। अभी हमने ये पढ़ा था कि देयर आर वेरियस एक्टिविटीज
बट हमने अभी ये पढ़ा कि जनरली सेम चीज वी कैन अचीव थ्रू फ्रेगमेंट्स, राइट? तो इससे एडवांटेज क्या हुआ? मान लो मेरा ऐप में कोई कॉल आता है, ओके, कोई टेलीफोन कॉल आ रहा है, बैटरी लो हो रही है, अचानक से स्विच ऑफ हो गया, रोटेशन हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, ओके, मेमोरी अचानक से खत्म हो गई पूरे ओएस लेवल पे, ओके। सो जो इसके ऑन क्रिएट, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप वाले मेथड थे, जनरली मेरे को बस इन 4 मेथड को ही हैंडल करना पड़ेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन restart the music player, I can kill the music player, I can pause the music player, I can do whatever I want just from the one place based on different conditions, right? बट अगर ये बहुत सारी एक्टिविटी होती तो आपको हर एक्टिविटी, जैसे आपने कल एक जैसे हर्ष ने अभी शेयर किया कि मैं एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी में जा रहा हूँ, तो स्टेट चेंज हो रहा है, राइट? जो लाइफ साइकिल मेथड था वो चेंज हो रहा है, इट इज बिकमिंग ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, टू ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम ऑफ बी। ए पॉज में चले जाएगा, स्टॉप में चले जाएगा, राइट? सो इट माइट बी गेट वेरी हार्ड फॉर यू टू मैनेज वन ऑफ द दिस क्रूशियल फीचर ऑफ वन ऑफ योर ऐप, राइट? एंड हमने कल सीखा था, इफ वी डोंट कंट्रोल इट वाइटली, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसके हम नहीं रखेंगे, इट कैन लीड्स टू लॉट्स ऑफ मेमोरी लीक्स, राइट? So the whole point was to explain कि why we are relying on the single activity architecture। मतलब मेरे पूरे प्रोजेक्ट में बस एक एक्टिविटी रहेगी, उसके अंदर का जो कंटेंट रहेगा स्क्रीन का, मैं उसको बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन चेंज करते जाऊंगा, ओके। तो आर वी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि why we are going with this single activity approach, and what was the problem with the multiple activity approach? I am glad ki Raj is coming from different background in programming and able to understand. What about others? Darshini, Bhavyansh, cool. Okay. So now uh, that was the thing that we wanted to discuss yesterday, but due to lack of time we didn't, okay. But uh, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई कि आपको फ्रैगमेंट्स सब थोड़े कम दिखेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, ओके। आपको सिर्फ अब कंपोजेबल सीखेंगे, ओके। ये भी क्यों है, ये भी हम सीखेंगे, ओके। लेट मी क्विट इट, ओके। सो कूल। नाउ जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि देयर आर वेरियस लेआउट्स, ओके, स्टैंडर्ड लेआउट, जिससे हम कोई भी कैसा भी यूआई बना सकते थे हमारे ऐप में, दैट वाज रिस्पेक्टिवली कॉलम्स, रोज एंड बॉक्स, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, Jetpack Compose comes with lots and lots of material components that we can use out of the box. Okay. For example, we're gonna see a text type of component. Okay. So if we go, okay, if we go, okay, let's try to have a look at this text composable, okay। I will come to the Android Studio, okay। Here generally आप देख ही रहे हो कि this greeting method is generally using the text composable, right? So instead of doing this, I'll just keep text composable here, okay। I will give it a name, let's say hello Android, okay। Now there are many things that you can do। आप यहाँ पे आके कमांड पी दबाओगे ना, तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, राइट?
that you can do this much of things with a text. Okay. Now uh, let me see. Yeah. Okay. So I can do text style. Okay. And I can provide different properties to my text. मैं चाहता हूँ कि मेरा text 16 sp हो, इसका size I wanted to have a font weight of let's say bold. Okay, I wanted to give it a color of, let's say, color dot red. Okay, cool. So I can all do this various thing using the style property of a text composable. Okay, so if I inflate it or if I run it, see, you can see the output here. Hello Android, right? Now देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि आपको हमेशा टेक्स्ट नहीं दिखाना है। आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको टेक्स्ट यूजर से चाहिए होगा, राइट? तो फॉर दैट वी हैव टेक्स्ट फील्ड। ओके, सो what we gonna do, we can create a text field using this text field property. Okay, now here is a little change we will have a look। पहले मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ and I'll just make the fix the errors। okay, now this text field is something कि जहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ। okay, so uh, just for टाइम बिंग डोंट स्ट्रेस कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ। ओके, हम कल कल जब हम जेटपैक कंपोज के बारे में और पढ़ेंगे, देन वी गोना लर्न अबाउट द स्टेट्स एंड दिस रिमेंबर lambda in a proper detail। okay, for just time being, understand it is a way to hold data, okay, or state, okay, in composable। so rather than value I will giving it a name field। okay, कल याद है हम let function के बारे में पढ़े थे, which was giving us a it type property that from that we can do certain actions on an object or on a uh, basically the type we will putting the let operation। so this is kind of that, not similar but a kind of a lambda which gives us the property। okay, so value provided by user। okay, so I will give it a name like this। okay, now what I'm gonna do, I will take name field, okay, and I will provide it value provided by the user। okay, it will gonna be var because it's going to change। okay, now I'll just remove this one। okay, and if I try to inflate it wrap content size। ओके, सो यू कैन सी कि आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है, राइट? आई कैन राइट फ्यू प्रॉपर्टीज हियर, राइट, एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ओके, सो if I do println, okay, and if I do this, okay, we can see the output as well। okay, so okay, I'm gonna delete it। लेट्स सी ये यहाँ अब
अपडेट होता है कि नहीं. ओके, see, I just written a here, and the print statement is giving me an value, right? As I am keep on writing, the value is getting inflated here. Okay, फिर हम उसको एक वेरिएबल में सेट कर रहे हैं, and the text which value it is been represented is been getting inflated using this value. Okay, so हमने वेरिएबल में वैल्यू को डाला, which we are getting from this on value changed method. Okay, and from here we are passing this value from that we are getting from the lambda and assigning it to the variable. Okay, and as the variable is already been assigned to this text field value property, जैसी इसमें नई वैल्यू आ रही है, न्यू वैल्यू, in the compose it is getting inflated automatically. Okay, it's because of the recomposition which we are gonna study about tomorrow. Okay, so अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, so whenever the value of this variable changes, this text field का एक लाइफ साइकिल चालू होता है. ओके, जैसे मैंने बताया था प्रोग्रामिंग में हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है. इस छोटे से कंपोजेबल का भी एक लाइफ साइकिल है. बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स इट गेट ट्रिगर, it get recompose and it stops. Okay, तो कल इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. So don't stress about this and this recomposition. Just try to focus कि what are the components that we can use to build our layouts. Okay, अभी बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका अचीवेबल गोल, अचीवेबल यूआई बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ओके, तो are we able to understand the basic text composable and text field, कैसे उसमें वैल्यू सेट करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट बना सकते हैं इन कंपोज इन एंड्रॉइड. विशेष, भाव्यांश, दीपक. Cool, cool. Okay, now we gonna see some more uh, things about text. Okay, हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं. ओके, नाउ जैसे सिंपल टेक्स्ट दिखाना वाज द इजी पार्ट. ओके, there is no limitation of things that you can do with the text. Okay, if you wanted to add a shadow you can add this. Okay, if you wanted to make it something like this you can do using brush. Okay, if you wanted to highlight certain things you can always do that using this text builder. Okay, that comes inbuilt with the composable. My intention was to showcase you कि there are many ways that you can get creative with composable very easily. Okay, and there are many things that you can do with just a simple looking composable. Okay, जैसे हमारे कोड में ये तो बहुत अभी सिंपल दिख रहा था, द टेक्स्ट फील्ड. ओके, एंड अदर थिंग, जैसे आप इसमें लेबल डाल दोगे, टेक्स्ट विद नेम. ओके, मैंने इतना छोटा सा लेबल डाला, सी यहाँ ऊपर नेम आ गया, राइट. एंड नाउ आई कैन प्रोवाइड वॉट एवर द स्टफ आई वॉन्ट. ओके, सो जैसे इसका हाइट बढ़ते जा रहा है, इसका वो बढ़ते जा रहा है, विड्थ एंड हाइट बढ़ते जा रहा है, राइट. So there are many various properties that comes along with this text field and text. You are welcome to explore them. Okay, cool. So this is the documentation. I'll share it over the chat box. You can have a look. Okay, cool. This was the simple one. Let's see some other material components. Okay, acha. When I say material component, what is the one thing that comes into your mind? Have anyone heard about material component? Material क्या है?
in terms of design and programming. If you have not heard about it, please react with this. Okay, so uh, material design. Okay, like how many of you use stock Android, like Google Pixel, Motorola? How many of you have a stock Android phone? Cool, cool. So जनरली क्या होता है, जो यूआई आपको पिक्सल में दिखता है ना, पिक्सल या गूगल के प्रोडक्ट्स में, ओके, जनरली थ्रू आउट द प्रोडक्ट्स, टू कीप इट कंसिस्टेंट, दे यूज अ मटेरियल डिजाइन. ओके, सो sorry, they use a design system called material design. Okay, so material design is an design system used by Google and recommended by Google to keep your app consistent throughout different devices. Okay, so uh, जैसे कि uh, जैसे कि हम ये जितने कंपोनेंट्स देख रहे हैं ना, ओके, वॉट एवर कंपोनेंट्स वी आर सीइंग हियर, फॉर एग्जांपल लेट्स सी एंड ऐप आर. ओके, जितने भी आप ये कंपोनेंट्स देख रहे हो ना, जैसे ये आइकन हो गया, ये बेसिकली ये कहाँ गया, ये जो आपको प्लस बटन दिख रहा है ये हो गया. ओके, वॉट एवर थिंग्स दैट यू आर सीइंग हियर, ओके, इट्स बीन एन डिजाइन सिस्टम प्रोवाइडेड बाय मटेरियल, प्रोवाइडेड बाय मटेरियल, मेंटेन्ड बाय गूगल, सो दैट आपके ऐप कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. ओके, सो व्हेन वी यूज कंपोजिबल, जब हम कंपोजिबल इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड भी है ना, तो ये मटेरियल डिजाइन से आ रहा है. ओके, सो see, you can see the mention कि एंड्रॉयड एक्स के पैकेज में कंपोज के मॉड्यूल में मटेरियल 3 से हम लोग चीज़ें उठा रहे हैं, राइट? सो विद इन दिस 10-12 years, 10-12 years, this material design has been improved with time. पहले मटेरियल 1 चलता था, फिर मटेरियल 2 चलता था, फिर जब से एंड्रॉयड 12 आया है, मटेरियल 3 आया है, विच इज एन एब्सोल्युटली a big change in their design system. Okay, so you can learn about material about here. Okay, एंड अगर आप ये चीज़ समझते हो ना कि व्हाट आई एम शेयरिंग अबाउट, ओके, इससे यू कैन बिल्ड वेरी कंसिस्टेंट एंड्रॉयड एप्स विदाउट मच एफर्ट. आपको यूआई यूएक्स की चिंता नहीं करनी है, आपको बस कंपोनेंट यूज करना है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग हैज बीन हैंडल्ड बाय यू. ओके, बट आप मान लो किसी इंटर्नशिप में जाते हो या कंपनी में जाते हो, वहाँ वहाँ कंपनी कुछ दूसरा डिजाइन सिस्टम इस्तेमाल करती है. ओके, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे हमारे प्रोजेक्ट में आप यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड. हमारे प्रोजेक्ट में यू कैन सी दैट सम कलर हैव बीन डिफाइंड. ओके, जैसे आप देख सकते हो कि ये पर्पल कलर आ रहा है, ये डार्क पर्पल लाइन ऑटोमेटिक आ रही है. मैंने अपने टेक्स्ट फील्ड में तो कहीं कलर मेंशन नहीं किया है, राइट? फिर भी दिस कलर इज बीन इन्फ्लेटेड.
This is coming from the design system that is already been set up by the default Android projects. Okay, अब आप बोलोगे ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, सो आई कैन शो यू। आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग एक्टिविटी लाइफ साइकिल थीम लैम्डा, पर हमारा जितना भी कंटेंट है इसके अंदर है, राइट। तो हम अगर कुछ चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज यहाँ पे डिफाइंड है हमारे थीम में, ओके, वो हमें मिल जाएगी। ओके, यू कैन सी वी आर पासिंग द मटेरियल थीम वेयर द कलर स्कीम डिपेंड्स अपॉन what UI we are uh, what mode we are running on। अगर dark mode है we change it to dynamic dark color, else we state the dynamic light color। okay, similarly for the typography, okay, कि you can define various typography as per your need। okay, for example आपको बहुत बड़ा टेक्स्ट फील्ड देना है, जैसे हम लोग जब HTML पढ़ते हैं तो वी लर्न अबाउट H1 टैग, H2 टैग, राइट, विच हैव दैट सम कांस्टेंट फॉन्ट साइज, राइट। बट इफ यू वांटेड कि आपका बॉडी लार्ज अगर इस्तेमाल हो रहा है और उसका फॉन्ट फॉन्ट साइज 8 एसपी हो, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, राइट। इट्स टोटली कस्टमाइजेबल। ओके, कूल। सो क्या हमें समझ में आया कि मटेरियल डिजाइन is a design system used by Google and maintained by Google in their products। and जब हम composables या Jetpack compose because it is coming from Google only, so internally they are using the material design system by default। and क्या हमें समझ में आया कि हम इन चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, that we are not forced to use it, हम चाहे तो अपना भी दे सकते हैं। आर वी गुड टिल हियर? ओके, तो लिखा तो समझ में आया। व्हाट अबाउट अदर्स? if not you can always react with this। okay, cool, cool। अगर things are not making sense, don't worry, ये ग्रेजुअली आपको पता चलते जाएगी। ओके, वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग एप्स ना, आपको ग्रेजुअली समझ में आता जाएगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट मटेरियल कंपोनेंट्स। हम दूसरे कंपोनेंट्स देखते हैं इसके अंदर। ओके, सो the most widely used is this scaffold। okay, अब scaffold होता क्या है, वी गोना सी। ओके, तो आप जनरली कभी भी बिल्डिंग कहीं बिल्डिंग वगैरह बनती है तो ये जनरली सी दिस काइंड ऑफ फ्रेम्स, राइट। ऐसे ढांचे ढांचे बने रहते हैं, राइट, दैट generally provide some support for the constructor to do various things over the construction, right? So generally there is a scaffold composable in Jetpack compose। okay, जब मैं scaffold इसको देता हूँ ना, okay, so it gives me a functionality to provide a top bar, okay, provide a floating action button, provide the body, and I can do lots and lots of stuff। okay, so scaffold एक कुछ नहीं है, scaffold एक ढांचा है which gives us the option to uh, do various stuff for us and we don't have to worry about। okay, for example uh, let's see an example। जैसे यूट्यूब है, ओके, यूट्यूब में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक एक तो ऐप बार बना हुआ है, राइट। दिस इज एन ऐप बार विच हैव सम buttons at the last, a title with an icon। आप देख सकते हो it have some bottom navigation buttons that I can have a control upon, right। so this whole thing, this screen that you see is a scaffold which using a bottom navigation bar and a top bar by using that component। अगर मैं ये नहीं करता हूँ ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सप्लिसिटली एक टॉप बार बनाना पड़ेगा, टॉप ऐप बार। ओके, टॉप ऐप बार बनाना पड़ेगा, फिर मेरे को इसको
इसको सेट करना पड़ेगा कि ऑलवेज रिमेन रिमेन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, राइट। मैं अगर एक बॉटम नेविगेशन बार यहाँ बनाता हूँ, ओके, बॉटम 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 ऐप बार अगर मैं बनाता हूँ, राइट, तो मेरे को एक्सप्लिसिटली इसको बोलना पड़ेगा कि ऑलवेज रिमेन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, राइट। तो मेरे को ये चीज एक्सप्लिसिटली ना करना पड़े, व्हाट आई डू, आई जनरली यूज स्कैफोल्ड, ओके, जैसे हमने फोटो देखा था, एंड ओके, एंड here in this option, in this method, I can see I am getting an option to provide an top bar, bottom bar, okay, floating action button, position and content। मतलब जितनी भी बेसिक चीज एक ऐप में लग सकती है, जितनी कॉमन चीज एक ऐप में लग सकती है, एक स्क्रीन में लग सकती है, दिस थिंग इज बीन बाय प्रोवाइडेड बाय स्कैफोल्ड बाय डिफॉल्ट। अगर मैं चाहूँ तो टॉप ऐप बार मैं यहाँ दे सकता हूँ, ओके, top app bar with the text title app bar, okay, and here I can paste the content, okay, like this, okay. It is showing me an error, just fixing, okay. So let's see the new UI। wow, UI नहीं दिखाया, यहाँ दिखाएगा, okay। So there can be a time कि ये reload काम ना करे, we have to just run the app again, right? So you can see I am got an app bar by default, okay. This app bar is gonna stick here in this screen, and below this in the content I am getting the text, okay. So are we able to understand what is scaffold, what is material design? Are we able to understand these basic things? Cool. Okay, now coming to the more components, okay, जैसे मान लो मैं आपको कल एक असाइनमेंट देता हूँ कि ये ड्रिबल का यूआई है, आपको बनाना है, ओके। तो a UI can be as complex as it gets, ओके। तो आपको इन सब टाइमों में ना ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है ना वो काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, the most standard thing that we use are the buttons, right? So in material design we have quite types of button, okay, that we can use based on our requirement, okay. So we gonna see the very basic type of button, okay, which gives us the filled button. uh yeah, Harsh, go ahead। तो लाइक वो क्या वैल्यू लिया, लाइक मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। sorry, I didn't heard you correctly, can you repeat? Are you talking about this padding value? So generally scaffold का एक property है that it comes with an padding itself of it, uh, which we are needed to use in our components, okay। so जो ये आजू बाजू थोड़ी सी जो padding आती है based on different screen type, like curve screen है या foldable screen है, based on that it gives us different value, and based on that we can
modify the position of our composables. Okay, so this is something that you should not generally worry about. Okay, this is, ये generally एक lint error है. Okay, this is an lint error. Okay, so you don't have to worry about it. Okay, now I was talking about buttons. Okay, so how we can create buttons? आपको कुछ नहीं करना है, you have to just write button. Okay, and you can see there are many buttons option available. You can create a normal button, an elevated button, you can create icon button. Okay, you can create floating action button. Okay, outline button. Okay, radio button, text button. Okay, there are many options. Okay, but the simple one we're gonna use is this one. Okay, and I'm gonna print ln something. Let's say uh, value of name. Okay, and I will use name field value. Okay, now button बटन का डिजाइन कंपोजिबल में कुछ ऐसा है. जस्ट अ सेकेंड. सो बटन का स्टाइल कुछ ऐसा है कि आप जब बटन बनाते हो. ओके, सो इट जनरली आस्क कि ऑन क्लिक में क्या होगा, जब इस बटन को मैं क्लिक करूं तो क्या होगा. ओके, जनरली ये पूछता है, और हमें एक रो लैम्डा देता है, रो टाइप लैम्डा. ओके, तो जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हमें रो डिफाइन करनी पड़ती है. ओके, एंड इसके अंदर मैं कुछ भी दूंगा. ओके, लेट्स से मैंने दो टेक्स्ट दिया. ओके, तो सो इन द लेआउट अगर ये बटन है तो एक टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और एक टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ a button works. Okay, we'll see in an action. So this is, you can see this is an row scope. Okay, so I can show you how it is working. So I can take icons default, uh, add. Okay, in the content description I will provide nothing. Okay, I will provide a text, say print name. Okay, and I can show you inflating this. Okay, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं यहाँ पे. I will give it 4 dp. Okay, which will be and width because it's a row. Okay, so let me rerun it. Generally to rerun it I am using command plus this forward slash. Okay, or backward slash, not sure. जनरली बैकस्पेस के नीचे रहता है ये बटन. ओके, कमांड प्लस दिस. ओके, फॉर सम रीजन इट इज नॉट inflating, so we gonna restart the app. Just a second, just a second. Sorry about that. अच्छा,
The reason we are not seeing it, what I have to do, I did it mistake. मेरे को इन सब चीज को कॉलम में रैप करना पड़ेगा, राइट? अभी हो क्या रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द कंटेंट. लेट्स सी इफ इट इज विजिबल, राइट? ओके. सो यू कैन सी कि मैंने बटन बनाया है बिकॉज इज अ रो स्कोप. ये क्योंकि हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, मैंने आइकन दिया, मैंने सरफेस से थोड़ी सी पैडिंग दी, थोड़ा सा स्पेस दिया, एंड आई हैव गिवन द प्रिंट नेम, राइट? अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करूंगा, निकेत, ओके, एंड इफ आई ओपन द लॉग कैट, delete it, and if I do print name, you can see once I hit this on click method got called, this is a lambda, and I'm able to print the name of the text, right? So um, did you understand it's how simple it's to create an button in Jetpack Compose? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. With just 5 to 6 lines, you are able to create as customized as button you want, right? So जनरली आपको बस ये ध्यान रखना है कि द बटन के अंदर जो कंटेंट होता है जनरली गेट्स इन अ रो स्कोप, ओके, इट गोज टू द हॉरिजॉन्टल. इफ आई keep on adding more stuff, okay, if I keep on adding more, you can see it is keep on adding to the horizontal level, right? क्योंकि बटन को हम नहीं चाहेंगे ना कि वर्टिकल जाए, इट शुड कंटेन अ content which goes horizontally, okay. So I hope this get very clear, very basic, okay. Now apart from buttons, there are many types of button that you can explore. I can share the link over here, but generally आप throughout the projects you're gonna use this button only, okay, and uh, and generally this button, okay, but you are feel free to explore this part, okay. Now uh, have apart from Harsh, as anyone have tried to do the assignment जो मैंने कल दिया था about changing from activity A to activity B, have anyone tried that? Okay. सो अगर किसी ने नहीं किया है, ओके, व्हाट आई विल रेकमेंड कि आज फिर से उसको ट्राई करना, बट इस बार आप ना एक बटन बनाना अपने एक्टिविटी ए में और ट्राई टू इन्फ्लेट दिस डायलॉग, ओके. मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ. ट्राई टू इन्फ्लेट दिस डायलॉग और अपने एक्टिविटी लाइफ साइकिल में देखना कि क्या चेंज आ रहा है, ओके. यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, ओके, एंड गिव इट अ ट्राई. आपको देखना कि कुछ नया देखने मिलेगा, ओके. यू विल सी, यू विल कैच एन न्यू uh, a new thing about activity life cycle, and you will understand actually how it works, okay. तो उससे आप एक डायलॉग बनाना भी सीख जाओगे और आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल का भी रिवीजन हो जाएगा, ओके. कूल. नाउ कमिंग टू अदर कंपोनेंट, ओके. जनरली हम लोडिंग करते हैं, ओके. Whenever we want to show loading indication to our user, we generally use these indicators, loading indicators, okay. So uh, I can show you. Yes. So this is a circular loading indicator. This is a linear progress indicator, and it is as easy as to use with this composables. You have to just write compose progress indicator, provide the color and track color value, and you can create this animation very easily. It will keep on working automatically, okay. Now we have uh, uh, components to handle this checkbox, okay. We have components to handle this switch, okay. We have components to handle chips, okay.
like this. Okay, uh, like this. Okay, जैसे मैंने बटन से जैसे बनाया था, a better way is to do that using chips. Okay, जैसे मैंने अभी ये बटन बनाया था ना, giving a plus icon and like this, a better way is used to use a chip. Okay, अगर आपको कुछ ऐसा UI चाहिए तो it's better to use a chip rather than a button. Okay, now previously we learned about card. Okay, card is one of the most vital used component in our Android apps. आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे थोड़ी सी शेडो दिख रही होगी, if I'm able to zoom it, right? If you see it very carefully, you can see that थोड़ा सा shadow है, थोड़ा सा elevation है, right? This is some difference that it comes when we use card. Okay, card component. Now the list goes and goes on. Okay, apart from this there are many other components that is available that you can use very easily and build any kind of component, any kind of UI based on using this inbuilt helper components. Okay, cool. So we understood about material design, we understood about various layouts indicators that we can use. Okay, now moving forward, acha, we also learn about different kind of buttons and how to use it. Okay, now we will come to the most important part of Jetpack Compose, is that modifiers. Okay, so uh, बिफोर गोइंग टू दिस मॉडिफायर थिंग, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ that will help you to get better at Jetpack Compose in general. uh, हाँ, ओके, जनरली हमने कल एक एग्जांपल देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस लेआउट, दिस पर्टिकुलर लेआउट, दिस कार्ड लेआउट, राइट? सो we gonna just do a simple breakdown ki how things works. Okay, so generally I'm talking about the internal working of Jetpack Compose. This is one thing that you should know. अगर आपको ये चीज थोड़ा पहले से पता होगी तो यू कैन राइट मोर परफॉर्मेंट Jetpack Compose कोड. ओके, सो हमारा यूआई कुछ ऐसा था. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ रो which consists of an image and which consists of an column within two text. Okay, अब इस चीज को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो वी हैव रो. Okay, row, and now row contains two elements, one is image. Okay, and one is column. Okay, अब इतनी चीज हुई. अब मैं इस कॉलम को अगर तोड़ूं तो दिस कॉलम कंसिस्ट ऑफ वन टेक्स्ट. Okay, and another text beside it, right? So अगर मैं इसका ट्री बनाऊं, ओके, अगर मैं इसका ट्री बनाऊं तो दिस इज आवर रो component. Okay, which contain two component, one is image, one is column. Okay, this is image, this is column, and if I divide into two more parts based on things, okay, this is text and this is text, right? So now you can imagine कि हमने बस ये छोटा सा लेआउट बनाया है, राइट? ये छोटा सा लेआउट बनाया है और जेटपैक कंपोज ने इंटरनली इतना बड़ा ग्राफ बना दिया, राइट? यहाँ से नोड चालू होता हुआ 1 2 3 4, अब मान लो इसके नीचे और कंपोनेंट्स होते तो द the tree that is forming gets very much more complicated, right? Now you will be asking कि भाई
सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी? द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कीपिंग just following the basic principles of Jetpack Compose, we can achieve more performance, okay, without knowing the underneath working of it, okay. But the whole point is कि why it happens. Generally, Jetpack Compose कैसे काम करता है? Whenever a value changes inside an component, the whole thing get re-render, okay, re-render and get uh, drawn in the UI, okay. बट अगर आपकी ये ट्री बहुत बड़ा है, इट कीप्स ऑन गोइंग, और आपने अपने कुछ नोट्स पे प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए हैं, तो होगा क्या? इसके नीचे के जितने भी कंपोनेंट है ना, दे विल बी गेटिंग री रेंडर lots and lots of many times, leading to performance issue, right? So in order to solve that, in order to achieve this, Jetpack Compose team have provided us some functionality, some principles that we need to follow in order to get a much more performant UI. Okay, so one of the things that is come is to how we define and modifier. Okay, अब आप पूछोगे सर पूरी रामायण बता दिए पर मॉडिफायर क्या होता है नहीं बताए. ओके, सो कमिंग टू द मॉडिफायर. A modifier is a class that we apply to a composable which help us do many things. Okay, it help us to uh, define the size, it help us to define a behavior, it help us to define an appearance. Okay, it help us to define some labels. Okay, जब हम यूआई टेस्टिंग करेंगे तो ये काम आता है. इट हेल्प अस टू डिफाइन, डू सम एक्शनेबल्स लाइक क्लिकेबल, स्क्रॉलेबल, ड्रैगेबल. ओके, मतलब एक चीज सब करता है. ओके, एंड अगर इसी एक चीज को हम गलत लिख दिए तो ये सब बिगाड़ भी देगा. ओके, दैट वाज द पॉइंट हाउ आई केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग. ओके, एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है. इसको मिटाने से बजाय मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ. ओके, बिकॉज जेटपैक कंपोज इज अ डायनामिक टाइप. जब आप इतना सा कोड लिखते हो ना, तो हाउ इट गेट रेंडर, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो we gonna see an example, but the thing we have to understand कि जेटपैक कंपोज का जितना भी साइज, मतलब स्क्रीन में कितना साइज लेगा, कहाँ पोजीशन होगा, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट द चिल्ड्रन. ओके, तो हम चिल्ड्रन में कैसे वैल्यूज देते हैं, इट जनरली इफेक्ट की चीजें कहाँ लाइक कहाँ ड्रॉ होगी और कितना ड्रॉ होगी. सो द पोजीशन, ओके, and the measurement, okay, depend upon the properties you defined inside your parent composable. Okay, so if we go to here, okay, and अगर आप इस चीज को रीड करोगे ना, ओके, तो यू विल गेट टू नो कि ये यूआई बनता कैसे है. ओके, एंड इट इज वेरी क्रूशियल टू नो. अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना, तो आपको जेटपैक कंपोज में इशू नहीं आएगा. ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या चीज़ इन्फ्लेट होती है, क्या चीज़ मेजर करती है, क्या चीज़ रिटर्न करती है, एंड कैसे ये यूआई बनता है. ओके, एंड इन ऑल दोस थिंग्स मॉडिफायर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, हम मॉडिफायर्स कैसे देते हैं, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. I will create a text. Okay, I will give it a text as hello Android. Okay, I will give it a style. बहुत बढ़िया. I will give it a style, text style with
font size, let's say 16 point sp. Okay, color as color dot red. Okay, now if I inflate it, अपने आप ऐप बंद हो गया. Let's rerun it. Okay, this is basic. अब मैं क्या चाहता हूँ कि this thing comes with an some padding. ये अब एकदम कोंटे में तो it's very hard to readable. Okay, तो मैं अपने हीरो को बुलाऊंगा. I will give modifier. Okay, I will give modifier. Okay, make sure to use it from the compose UI. आप ऐसा मत करना कि आप जावा रिफ्लेक्ट का मॉडिफायर इस्तेमाल कर लो और फिर you get very stressed about कि चीजें काम क्यों नहीं कर रही. Okay, make sure to use it from the Android X compose library. Okay, so modifier, now not like this. I will say key keep a padding of 24.dp. Okay, then I will say give it a background color of, let's say, color dot uh, color dot green. Okay, so, and I will say key take the full width that is available in the screen. Okay, so let's see it the working. You can see 24 dp, the padding has been applied, a background green color has been applied. Okay, and you can see the width it is taking is the complete width available in the mobile screen, right? अगर ये मोबाइल स्क्रीन और बड़ा हो जाएगा तो दिस वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ओके, बट यू आपको आपको ये फिर भी इट इज गेटिंग वेरी हार्ड टू रीडेबल, राइट? नाउ मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि रेदर देन राइटिंग दिस कोड, मैं बोलूंगा कि आप पहले मैक्स विड्थ दो. ओके, मैक्स विड्थ के बाद इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर दो, फिर पैडिंग दो. ओके, मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया. अब इफ आई मेक इट रन, नाउ यू सी द मैजिक. अब हुआ क्या, मैंने जैसे मॉडिफायर की प्रॉपर्टीज का ओरिएंटेशन चेंज किया, मेरा आउटपुट चेंज हो गया, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मॉडिफायर वर्क्स एंड the uh, the order you provide the modifier, it's always plays an important role, right? अब जो भी चीज मैं पहले लिखता हूँ, ओके, that get applies to a composable. Okay, and if I keep on adding, if I keep on adding more stuff into this, it is keep on adding to the property of this composable. Okay, and it is possible using modifiers. Okay, so uh, are we able to understand कि what we are doing here? हमने क्या समझा कि मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर इज जनरली a property that help us to modify the composable. Okay, अब वो मॉडिफाई बहुत सारे तरीके से हो सकता है. कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, बिहेवियर ऐड कर सकते हैं, अपीयरेंस कर सकते हैं, उसमें इनपुट इवेंट्स डाल सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि बटन में, इफ वी यूज अ बटन, हमें ये ऑन क्लिक मेथड जनरली ऑटोमेटिक मिलता है इस बटन में, राइट? बट इफ यू से वी कैन ऑलवेज डू दैट यूजिंग दिस मॉडिफायर एज वेल. ओके, so if I do clickable, I'm get this clickable action. Okay, all possible because of modifier, and I can do print text got clicked.
Okay, if I run this, okay, uh, okay, if I try to tap on it, you can see I'm able to uh, tap the text, right? So I'm getting this output, right? Now if I do this, okay, and run it again, acha, cool, cool. If I do this, okay, and run it again, सी पहले पहले बिहेवियर क्या हो रहा था, जब मैं सिर्फ टेक्स्ट में क्लिक कर रहा था ना, तभी आई वॉज एबल टू गेट द आउटपुट, ओके। बट क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, नाउ दिस क्लिकेबल इज एप्लीकेबल to throughout the green area that we are able to see, right? So that's why the composable order of a modifier, it's very important, okay? But don't stress about it. Generally with time you will get the hang of it, and आप समझ जाओगे कि किस चीज को कैसे यूज करना है, okay? Cool. So that was about little about modifier, okay? uh, we gonna see how to create a list in Jetpack Compose, okay? So before going to that, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिससे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रोना आ जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान था इस चीज से, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। ओके, सो पहले जब हम व्यू टाइप इस्तेमाल करते थे, ओके, इफ समबडी इज नॉट अवेयर, पहले हम लोग एक्सएमएल लेआउट, पहले जनरली अगर हमें यूआई बनाना पड़ता था ना, तो जनरली द कोड यूज टू लुक लाइक दिस, ओके। मेरे को एक्सप्लिसिटली एक्सएमएल में डिफाइन करना पड़ता था कि ये इमेज है, ये टेक्स्ट है, एंड हैव टू डू थिंग्स बेस्ड ऑन दैट, ओके। सो पहले जब हमें लिस्ट बनानी पड़ती थी ना, तो वी हैव टू डू चेंजेस इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस, ओके। अब मैं इसमें एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओके। सबसे पहले हम सबसे पहले हम लेआउट बनाते थे, ओके। जैसे आप लेआउट अभी स्टैंडर्ड लेआउट आप देखते हो ना, कॉलम, रो, बॉक्स, पहले एंड्रॉइड में लेआउट्स बहुत टाइप के हुआ करते थे, ओके। फ्रेम लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, लिनियर लेआउट, ओके। नाउ हमें लेआउट में पहले डिफाइन करना पड़ता था कि इट विल गोना कंटेन अ रिसाइकलर व्यू, ओके। उसका भी टैग आता था, उसके भी एक्सएमएल टैग आते थे, ओके। फिर एक आइटम का, जो हम लोग इन्फ्लेट करेंगे एक आइटम, उसको उसका लेआउट बनाना पड़ता था, ओके। देन मेरे को एक एडेप्टर बनाना पड़ता था, ओके, विच विल, दिस कोड वाज कंपलसरी, इतना कोड लिखना जरूरी होता था, ओके। फिर मेरे को इस एडेप्टर को अपने यूआई एलिमेंट से कनेक्ट करना पड़ता था, ओके। कुछ कुछ उसमें चीजें सेट करनी पड़ती थी कि ये डेटा रहेगा, ओके। एंड जब एवरीथिंग वाज सेटल डाउन, देन आई वाज एबल टू सी a list of like this, okay. So you can see one, okay,
2, 3 एंड 4. ओके, मेरे को टोटल 4 क्लास बनानी पड़ती थी, 4 जगह लिखना पड़ता था टू बिल्ड एंड परफॉर्मेंट लिस्ट. ओके, नाउ मैं आपको वही चीज कंपोज में करके दिखाऊंगा. ओके, so I will create a while names list of type list will be of type string, contains name of uh, few members here. Okay, Harsh, Raj. Okay, uh, और कौन है देख लेता हूँ. दीपक. ओके, and then the list goes on. Okay, so I'll take one more. uh, uh, I'll take text 52. Okay, so this is the list of the names. Okay, now अब मेरे को लिस्ट बनाना है ना, तो आई विल यूज लेजी कॉलम. ओके, लेजी कॉलम किया मैंने, मॉडिफायर इसको दिया मैंने कि अब थोड़ा सा. ओके, एंड मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कार्ड बनाऊंगा. कार्ड नहीं, अभी आई विल जस्ट डू अ टेक्स्ट. ओके, एंड अच्छा, माय बैड, आई विल कॉल दिस मेथड आइटम्स. ओके, I will pass names list. Okay, uh, okay, and I will do text. Okay, and I will provide the it property to it. Okay, जो मेरे को उस लिस्ट से मिल रही है. Okay, for better you presentation purpose, I will provide a modifier dot padding of, let's say, 4 dp everywhere. Okay, if I run this, इसमें मैं कुछ और नाम ऐड कर देता हूँ जस्ट टू शोकेस की. ओके, इफ आई नाउ रन इट, you can see I'm getting a list of an item without much effort. Okay, just with couple of lines, मतलब मेरे को बस इतना कोड लिखना है, and I am able to achieve the same thing that was previously used to take at least more than 200 lines, right? So you can see how concise and how beautiful the compose is. Okay, so just with small things you can create a very good you can create very good UI, performant UI without any uh, uh, without any hustle, right? So इस चीज को if I do it more, okay, even more. Okay, थोड़ा और कर देते हैं. ओके, मतलब मान लो इतना नाम का लिस्ट आया, आई एम नॉट श्योर कि ये पार होगा कि नहीं, और डाल देते हैं. ओके, लेट मी रीरन लेट मी रीरन द ऐप अगेन. सी, आई एम एबल टू क्रिएट अ स्क्रॉलेबल लिस्ट without much effect, and in each item I can now provide a on click method, or I can provide various properties from here. ओके, मतलब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, तो लेजी कॉलम, जैसे हम कॉलम इस्तेमाल करते थे टू क्रिएट कंटेंट एट द वर्टिकल फैशन, जब मैं लेजी कॉलम इस्तेमाल करता हूँ, ओके, इट क्रिएट अ स्क्रोलेबल इफेक्ट बाय डिफॉल्ट. ओके, it takes an item object, okay, item function,
ओके। आइटम्स में मैंने इस लिस्ट को पास किया विच कंटेन नेम ऑफ सम पीपल हियर, ओके। एंड मैंने इस लैम्डा खोला, इस लैम्डा में मैंने टेक्स्ट की वैल्यू दे दी, ओके, कि प्लीज इन्फ्लेट दैट स्ट्रिंग, एंड बूम, we are able to create a list without much efforts, okay. Now this is not just one thing that you can do with the list in Jetpack Compose. I will show you the documentation. Similarly, to a list you can create a grid type. उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कितने कितने कॉलम्स होंगे, you have to define that, okay. You can similarly create the same with the rows, okay. uh, if there is an example of row, okay, जैसे हमारे पास लेजी रो है, लेजी कॉलम है, वैसे वी हैव लेजी रो, ओके। if you wanted to inflate the things at the horizontal level, horizontal fashion, you can do that, okay. Now I've already taught you about the grid, okay. You can show a grid. Now द अदर थिंग इज कि मान लो आपको कुछ ऐसा लेआउट चाहिए कि you wanted to add some headers to some particular types, right? You can always do that using this sticky headers, okay. This comes inbuilt with the uh, lazy column, okay. So this these things are very easy to implement. आपको बहुत सारा हसल, बहुत सारा कोड नॉलेज होने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट इन्फ्लेट दिस लेजी कॉलम एंड यू आर एबल टू क्रिएट अ लिस्ट, ओके. इन फ्यूचर वी विल गोना टॉक अबाउट एनिमेशन, बिकॉज एनिमेशन के लिए आपको रिकम्पोजिशन स्टेट्स आना जरूरी है. बट देर आर मैनी वेरियस थिंग्स यू कैन डू विद दैट लेजी कॉलम. आई विल गोना शेयर दिस लिंक विद यू एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई, okay. But the gist is key, it is as simple as inflating, calling this lazy column, provide a list, provide an item that you wanted to show, and boom, you are able to create a scrollable effect by default, okay. uh let us see if we can do lazy row. Though we have provided a padding, let's see क्या होता है. Cool. Rather than showing likewise, now I can create basically like this, okay. So you can see how simple it is to build a list type in Android using Jetpack Compose, okay. Let me know ये पल्ले पड़ा. Are we able to understand how we can create lists in Jetpack Compose? Harsh, Darshini, Deepak, what about others? Tulika, Bhavyansh. Cool, cool. So that was how we can do various layouts, things, and little bit about modifiers. But this is not the end. Uh, Tomorrow we gonna learn about view models and state management. Okay, उसमें भी बहुत सारा चीजें हैं that is important, needed to move forward. But I will highly recommend you कि आज जाओ. आज आप कल तक का आपके पास दिन है, कल तो सैटरडे भी है. यूटिलाइज इट, ओके. एंड जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बताए थे, ट्राई टू क्रिएट अ लेआउट, ओके. ट्राई टू इंक्लूड लिस्ट, whether horizontal, vertical, okay. Create buttons, okay. Try to create a uh, any layout of your choice, okay. For example, if we go to dribble, 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 okay. If we go to here, अरे बहुत बढ़िया. एक सेकंड दोस्तों.
साइन इन तो करना पड़ेगा मेरे को। अरे बाप रे, रुको यार। ड्रिबल, यूआई, पार्किंग ऐप, कुछ भी ले लो। ओके, साइन इन करने बोल देगा तो यू आर बैड लक। ओके, नाउ अब इसमें ना पीपल हैव प्रोवाइडेड देयर क्रिएटिविटी। ओके, आपको जो ऐप बनाना है, ओके, मतलब जिसका भी लेआउट बनाना है, जस्ट ड्रिबल इट आउट, डू सम बेसिक सर्च। ओके, जैसे मैंने पार्किंग ऐप किया, इट हैव गिवन मी सच अ गुड डिजाइन। ओके, फॉर एग्जांपल, apart from this circular custom item, I have taught you how to create text, how to create card layout, how to create buttons. Okay, adding an image is a very easy process. You can always google it and give it a try. द पॉइंट इज कि आप कोई सा भी लैंडिंग पेज उठाओ, जनरली बस वो एक पेज का होना चाहिए, एक स्क्रीन का होना चाहिए, एंड ट्राई टू रीबिल्ड इट। ओके, so your assignment will be to pick up an idea from an dribble. Okay, and when you send me a screenshot of your app, okay, share me the dribble link as well, so I can go and give it a check out, and I will then go and review your code. You can improve this code. Okay, that way we will be doing practical learning. Okay, and it will help you to get started with Jetpack Compose. Okay, so क्या हमें असाइनमेंट समझ में आया? You can react with this if नहीं आया तो। अच्छा, भाव्यांश, हमें कुछ नहीं करना है। ड्रिबल इज एन साइट। ओके, ड्रिबल इज एन यूआई यूएक्स डिजाइनर साइट। वहाँ पे उन लोग वेरियस ऐप आइडियाज का यूआई यूएक्स को पोस्ट करते हैं। ओके, हमें क्या करना है, हमें वहाँ से कुछ भी आप उठा सकते हो। ओके, मैं जैसे पार्किंग ऐप लिया हूँ, आप लॉग इन सर्च कर सकते हो। ओके, आपको बेसिक, आपको लेआउट मिलेगा ऐप का। ओके, नाउ यूजिंग दैट इंस्पिरेशन, आपको इस चीज को रेप्लिकेट करना है using Jetpack Compose, and it can get as simple as you want. जैसे इसमें एनिमेशन ये सब कर रहे हैं ना, you don't have to take care of that. आप जितना क्लोज उस ऐप के आ सकते हो, you have to build that. Okay, take 1 day 2 day, maximum 2 day, try to build it, and once done, try to share that in the group, and once you post the code and the dribble link जिसको देख के आपने बनाया था, then I will review your code, and based on that we will move forward. Okay, उससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि how much you are able to understand Jetpack Compose, and what new things you might have learned along the way. Okay, so now are we clear? Raj, Deepak, Darshini, Bhavyansh, Harsh, Tulika, cool. So that was pretty much it from my end for today. Harsh, this is something you can always, while मतलब जितने links मैंने share किया है, with that you will able to understand that, but my reason of not putting alignment and arrangement now was because in tomorrow's or upcoming session I will cover that with more depth. Okay, cool. So that's pretty much it from my end for today. I'll see you all tomorrow, and let me know if you have any doubts, queries. We can always discuss it in the group. Okay. So thank you everyone. Bye bye.